Dear students, I'm going to discuss with you the process of standardization, the area table of the standard normal distribution, and the computation of probabilities pertaining to a normal random variable. First and foremost, let us recall what is meant by a normal distribution. A random variable x is said to have a normal distribution if its PDF is given by small f of x is equal to 1 over sigma under root 2 pi into e raised to minus half x minus mu over sigma whole square, such that x goes from minus infinity to plus infinity. Mu is the mean of the distribution, sigma is the standard deviation. And we denote this by capital N mu sigma square. In some books, you will find that they would write capital N mu sigma. लेकिन मैं जो follow करूंगी, that is this one, capital N mu sigma square. All right, as you know, it's a beautiful bell-shaped curve which extends from minus infinity to plus infinity. लेकिन चूंकि उसका मीन म्यू है, इसलिए जाहिर है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो सेंट्रल पॉइंट है विच इज डायरेक्टली अंडर पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे हम लिखेंगे म्यू. अब व्हाट डू आई मीन इफ आई से दैट आई वुड लाइक टू standardize, I would like to convert this x to z, where z is the standard normal random variable. अगर मैं ये करना चाहूँ तो all I have to do, my dear students, is to apply the formula capital Z is equal to capital X minus mu and this thing divided by sigma. Let me say it again. अगर हम रख दें, if we let capital Z be equal to X minus mu over sigma, तो अब जो नया वेरिएबल जो है हमारे पास, it is easy to prove that the mean of this one will be equal to 0 and the standard deviation or the variance of this one will be equal to 1. यानी जो हम चाहते हैं कि हम कन्वर्ट कर दें अपने x को z में, यानी हमें हासिल हो जाए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका ये तरीका है. सवाल ये पैदा होता है कि why would we want to do it? देखिए, बात ये है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए the area table has been constructed. This table, which is well known all over the world, it's called the area table of the standard normal distribution. Basically, ये क्या है? It gives you the values of the CDF corresponding to various values of Z. बात ये है कि वो जो हमारा PDF है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो PDF है, it is not possible to calculate that integral in the closed form. उसके लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, न्यूमेरिकली निकालना पड़ती हैं एरियाज की वैल्यूज, और इसीलिए ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर दी गई है. And this is the table that you will be utilizing in order to find any probability that you might want to find. तो अब बात ये है कि हमें तो जिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम डील कर रहे हैं वो तो स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, वो तो है दैट वन जिसका मीन म्यू है और जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है. उस वाली के लिए अगर उसको हम उस वेरिएबल को x से डिनोट कर रहे हैं और उसके लिए हम चाहते हैं, वी वांट टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी
that x lies between a and b, कोई दो नंबर आप ले लें a and b, तो अब ये probability कैसे हमें मिलेगी? We would need to determine the area under the normal curve between a and b. जैसा मैंने अभी कहा कि वो एरिया आम जो टेक्निक्स है इंटीग्रेशन की उस तरीके से नहीं हमें मिलता, एंड वी हैव टू गो टू दिस एरिया टेबल. लेकिन बात यह है कि एरिया टेबल सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंस्ट्रक्ट की गई है. इट्स नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट millions and trillions of area tables, one against each combination of values of mu and sigma. So एक चूंकि है तो हम उसके बाद क्या हम करते हैं कि हम अपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू और सिग्मा वाली, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड देन क्विकली go to the area table in order to find that particular area which will give me that particular probability. So let me try to explain this to you with the help of a simple example. Suppose that the random variable x is normally distributed with mean equal to 2 and variance equal to 25. जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं? We can write capital N, उसके बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर 2,25. हमेशा जब ये लिखा जाता है तो पहले कॉमे से पहले हम म्यू की वैल्यू पुट करते हैं, बाद में आप सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें. तो अब अगर x मेरा जो है, दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी that x lies between 0 and 10. अगर मैं इस probability में interested हूँ कि इस बात की क्या probability है कि मेरा x जो है that will lie somewhere between 0 and 10, तो उसके लिए फिर हम क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये नोट कर लें कि probability of x lying between a and b can be written as capital F of b minus capital F of a. तो इस केस में कैपिटल F of 10 माइनस कैपिटल F of 0. लेकिन अब हमें ये स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेगी क्योंकि कैपिटल F of 10 के लिए कोई टेबल अवेलेबल नहीं है. मेरा मतलब है कि इस पर्टिकुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई टेबल अवेलेबल नहीं है जिसका मीन 2 हो और जिसका वेरिएंस 25 हो, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन 5 हो. तो मुझे capital F of 10 directly नहीं मिल सकता. तो I will then standardize, and then how can I write this whole thing? I can write a probability of x lying between 0 and 10 is equal to capital F of 10 minus capital F of 0, but this is further equal to capital phi of 10 minus 2 over 5 minus capital phi of 0 minus 2 over 5. अभी ये मैंने क्या किया? बात ये है स्टूडेंट्स कि जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल Z इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो म्यू की वैल्यू 2, सिग्मा की वैल्यू 5, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल Z इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर 5. इसके बाद x की ये जो दो वैल्यूज हैं ये बारी बारी पुट कर दें. एक x की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 2 ओवर 5, और दूसरी वैल्यू है 0, तो 0 माइनस 2 ओवर 5. अब सवाल सिर्फ ये रह गया कि ये कैपिटल फाई क्या चीज़ लग गई उसके साथ. देखिए, जिस तरह कैपिटल F is the CDF of my original normal distribution, the one having mu and sigma as 2 and 5, इसी तरह capital phi represents the CDF of the standard normal distribution. ये जो मैंने z equal to x minus mu over sigma कर दिया तो standardize कर दिया ना. तो अब जो standardized version में जो है
उसके साथ कैपिटल F नहीं लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे कैपिटल 5. This is the notation which is used all over the world, so we will follow it also. है वही चीज कि it's the CDF for that number and minus the CDF of that other number. तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. पहला जो है कैपिटल 5 of 10 minus 2 over 5, यानी कैपिटल 5 of 8 over 5. तो वो क्या 8 over 5 क्या किसके बराबर है? इट इज 1.6, या आप उसको 1.60 भी लिख सकते हैं. दूसरा जो है 0 minus 2 over 5, यानी minus 2 over 5, यानी minus 0.4. उसको आप minus 0.40 भी लिख सकते हैं. ये मैं क्यों कर रही हूँ? ये मैं डिलिबरेटली कर रही हूँ. अभी जब मैं एरिया टेबल आपके सामने रखूंगी तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 2 डेसिमल क्यों रखे. सो नाउ द टाइम हैज कम for me to utilize this area table to get the values of capital phi of 1.60 and capital phi of minus 0.40. एरिया टेबल मुख्तलिफ तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती हैं. जो मैं इस वक्त आपके सामने रख रही हूँ उसमें आप नोट करें कि जो पहला कॉलम है that gives you the values of z correct to 1 decimal, और जो ऊपर टॉप रो है that gives you the indication of the number that has to occur at the second decimal place. तो उसके बाद जो बाकी तमाम जो टेबल है, the body of the table, उसमें अगर आप सबसे पहला नंबर देखें z इक्वल टू 0 के अगेंस्ट और ऊपर जो लिखा हुआ है 0.00 उसके अंडर, सो दैट नंबर इज 0.5. तो ये बिल्कुल सही है कि कैपिटल फाई ऑफ 0.00 या कैपिटल फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.5. आफ्टर ऑल कैपिटल फाई क्या चीज है? CDF. क्या मैं ये कह सकती हूँ कि in other words I'm saying the probability of capital Z being less than or equal to 0? Of course that is correct. Capital phi of 0 means the probability of capital Z being less than or equal to 0. तो देखिए जो हमारी बेल शेप्ड कर्व है और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेल शेप्ड कर्व की बात हो रही है. ऑफ कोर्स उसका जो मिड पॉइंट नीचे z एक्सिस के ऊपर वहां पे 0 ही लिखा हुआ है ना, तो half of the distribution is on the left side of 0, the other half is on the right side of 0. It is absolutely symmetric. Total area under the curve is 1. तो फिर जो 0 के इधर है वो 0.5 ही होगा ना जी. So that is correct. अब इसके बाद अपना जो नंबर है उसको देखते हैं. हमारा नंबर है 1.60. सो पहला जो कॉलम है उसमें आप नीचे आ जाएं उस जगह पे जहां पे लिखा है 1.6. अब जो सेकंड डेसिमल पे है दैट इज 0, इसलिए जो ऊपर 0.00 लिखा हुआ है उसके नीचे आ जाइए अगेंस्ट 1.6. एंड व्हाट इज दैट नंबर? दैट नंबर इज 0.945. As you can see in the table, that number is 0.945. और उसके बाद जो दूसरा नंबर है which is minus 0.40, students, उसके लिए हमें एक और फॉर्मूला छोटा सा अप्लाई करना पड़ेगा, and that is capital phi of minus z is equal to 1 minus capital phi of z. Due to the absolute symmetry of the distribution around 0, this formula holds. And you can very quickly verify this by giving different values to z.
तो इसलिए हम अभी यहाँ पे -0.40 का जो कैपिटल फाई निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम पहले 0.40 के लिए जो वैल्यू आती है वो देखेंगे और उसको 1 में से माइनस करेंगे. दैट विल गिव अस द नंबर वी वांट. सो इफ यू लुक एट द टेबल, यू फाइंड के 0.4 के अगेंस्ट 0.00 के अंडर the number is 0.655 और 1 में से इसको माइनस कर देंगे और वहां पे पुट कर देंगे और ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी वो फिर क्या निकली? The probability that x lies between 0 and 10 is equal to 0.945 minus 1 minus 0.655 और इसको सॉल्व कर लीजिए. इट कम्स आउट टू बी 0.600. In other words, it is equal to 60%. So this is the mechanism by which we utilize the area table of the standard normal distribution to compute various probabilities.